Managing Committee of the Indian Women's Press Corps. In fact, the entire fraternity and the staff, I welcome you all. You made it here for this important panel discussion, which is the Election Commission credibility and Indian democracy. So before we move on, I would like to take a few moments to dwell on why exactly are we holding this talk or this panel discussion at this juncture. What is it that has prompted us? So there are no easy or quick answers. It is not one or two factors. It is a much wider perspective. And at the center of the perspective or the entire scenario is really the Election Commission, which is in a way the fulcrum of our functioning democracy. And with it lies the mandate. It's of course we all know it's a constitutional autonomous body, and will be the mandate of conducting elections in a free, transparent way and maintaining the purity and the credibility of the electoral rolls. That's how the electorate engages with the whole principle of working democracy in the country. So it is not as if the Election Commission has not come under scrutiny earlier, or there have not been questions. There have been several questions over these decades since the electoral process started in India. But in the last couple of months, we have been witnessing a different kind of upheaval, which has, we almost started on June 24th when the Election Commission of India announced the SIR, the Special Intensive Review in Bihar. So it's not as if summary reviews and other reviews have not been done. Even SIRs have been done almost 8 times. But this particular one coming in the way that it did just 4 months before the assembly elections, there were questions raised on the timing, on the entire process of each step actually from enumeration, which is rather the crux of the whole thing, the verification, the publishing of the draft rolls, then the addressing the claims and objections, laying it open to the public, and finally the publishing of the final rolls. Apart from these procedural questions, there were other questions of transparency of the entire procedure, which means the engagement of political parties, of public access to rolls and to the status of their complaints, and several other things. And overlaying all of that, there were even larger questions which were talking about exclusion of groups, marginalized, possible exclusion. It wasn't verified, but there were concerns raised about that, possible exclusion of several marginalized groups, even disenfranchisement, and in a much larger sense, determining citizenship. The whole electoral roll process was being connected with determining citizenship of the people of this country. All this has been quite unprecedented, and the uproar has also been unprecedented. There have been questions which have, of course, the media has been at the forefront of it. Political parties, one would expect, especially in the opposition, but across the sectors I would say, civil society organization, think tanks, policy analysts, citizen groups, concerned citizens groups, and the judiciary has come in a big way. So all of this is up in the air, and the Election Commission of India is moving ahead with the next phase, which is already underway, which is across 9 states and 3 union territories across India. So these questions remain, and they pertain to us as a country, to each of the citizens. Whether you're on the roads or off the roads, or you're going to be, struck off or not, that's one aspect. But it does pertain to the functioning of Indian democracy, because it's predicated on that. So that's where we come. This is the point that this panel discussion is predicated on. It is not as if we hope for all the answers in a jiffy. We have people
here who have been struggling and working and delving into these issues since its surface, even before that. And there are probably no easy answers, but our job is to ask questions and to get answers. And as we see it here, the press does ask questions, but who do we ask it to? And what is the hope or what is the access of getting the answers? Certainly, the Election Commission of India is at the center of it. So it does need to answer. It does need to allay the fears, concerns. And if there are, I'm sure there is enough reason, there is enough of a groundwork as to how this process is moving forward from their perspective. That needs to be communicated. So yes, certainly our questions are to the Election Commission of India, but in a broader sense, it is to the entire institutional mechanism of democracy functioning in the country. So all the people, all the entities who are in authority will need to answer, and our job is to frame those questions, and I hope we will not stop framing that. So that is from the point of view of why, therefore. And now, before I move on to introducing our very distinguished panel, I would just like to just say that we will request you all to speak for about 10-12 minutes, after which there will be a Q&A session. So I would really request you all to hold on to your questions, maybe note it down, even if it's one panelist query is based on a panelist discussion. And this is again a very warm welcome. And now I'm really so delighted to have our distinguished panelists on board. Mr. Ashok Lavasa, he's been the former Election Commissioner of India, and he knows the procedures and the processes of working the body, the working of the commission, as well as, I'm sure, the pulls and pressures, which he has been very vocal about, but we would like to hear more from him. Very happy to have Major Verma, and he heads ADR. And that is one of the leading bodies which works to safeguard democratic processes in this country. And it is one of the petitioners in SIR in the Supreme Court. There are several pending petitions raised by several organizations and individuals, including politicians. And this ADR is one of them. And it is during one of the court hearings that there was a landmark judgment of including Aadhaar card as a 12th document for verification and for inclusion in the electoral roll after SIR Bihar. So there are many landmarks going forward during the court hearings also. And we are delighted to have Mr. Tyagi, who is a spokesperson and a seasoned politician, spokesperson of JDU, and as a key partner of the NDA alliance. His is a voice that is imperative in giving political perspective and the rationale and the overall perspective from the point of view of the ruling party in some sense. The constituent, but also the ruling party. So a very warm and hearty welcome to you. So maybe we can go ahead with the discussion. By India. Yes. So I would request Mr. Lavasa. I think the world is moving from left to right. Yes. No, but already you were, there, the whole, procedure and this thing. So from election commission, totally disembodied. My point. Well, thank you very much for inviting me. Before I say anything, not. Sir, can you take that mic? Yes. Yeah. So thank you for this side conversation. This is a broad topic, sir, and you have such a vast experience, and we have short time. So really, I leave it to you to highlight what, for example, if I may suggest, the credibility of election commission. What do you think are the steps that are required
to bolster it? And has the SIR at all met its stated objectives, and what are the lacuna? It could be that. That's just a suggestion. And we can come to each person as each panelist, and then we can just. Yeah, but I'll leave it completely to you. No, thank you very much. First of all, I should say that I don't represent So anyone. sorry for Please take the interrupting. mic. Take this mic. Hand mic. Electronic. No, hand mic. Yes, yes. That will cover your face also for the photograph. Hello. Yes, female voice. So thank you very much for inviting me. I must say that I don't represent anyone except myself. So whatever I'll say will be based on my understanding of what is happening. I think starting from the special intensive revision, as it is called, if you go back in time, and maybe Tyagi can help me because he's been in public life far more than I have. Perhaps this is the single decision taken by the Election Commission which has invited maximum debate and to a certain extent controversy. I think the Election Commission in the last 75 years of its existence has established for itself a very fine reputation for transparency, for inclusiveness, and for fairness. And that it has been able to do because of the procedures and practices that it has adopted. In fact, Hillary Clinton mentioned that it meets the gold standard, whatever it means. But on the whole, there have been surveys in India in the past where Election Commission has scored very well in terms of public trust. In fact, if I'm not mistaken, it probably rated as the highest institution. Now, this special intensive revision exercise, which has been conducted, should be seen from the point of view of three parameters. One is, what is the purpose? What are the principles? And what was the procedure that was followed? And based on your understanding or assessment of all the three, you might have answers to the credibility question that you raised. So the purpose clearly is that you need a pure or purified electoral roll. Nobody can dispute that. But the question would be that, is this the best way of achieving it? So that is the question. And the instrument which was adopted for carrying out that exercise, namely the special intensive revision, unfortunately, this phrase does not exist in the law. But does the Election Commission have the authority and power to do it? The answer clearly is yes. And that is what even the highest court of the land has upheld. There is a provision for different kinds of revision in law, which has been done from time. There is even a provision for an intensive revision to be carried out. If there is reason to believe that the electoral law of a particular constituency or a group of constituency or a district or a group of districts has been carried. And then an intensive revision can be carried out, where Election Commission actually starts rewriting the electoral. But so on the purpose, I think there is no dispute, because nobody will like to say or believes that somebody who is not eligible
should be included in the electorate. As far as the principles are concerned, I think that is where the questions started coming up. One principle which has been followed always in independent India is that the Election Commission, through its vast machinery which it employs in the field, has always believed that it is Election Commission's responsibility to make sure that every eligible person is included in the electorate. And that has been the way in which all electoral roll preparation revisions have been carried out in the past. In fact, people believe, and I think that's quite right, that it is because of this inclusive approach that India has probably the highest EP ratio in electoral democracies. Our EP ratio, for those who like an explanation, it means the proportion or the ratio of the number of people, eligible people who are included in the electoral roll in comparison to the people who are above the age of 18. So India has 99% or more EP ratio, whereas in countries which are older democracies, this EP ratio is lower. The biggest example is of the US, where it is the responsibility of the citizen to apply for a vote. Whereas in India, it is the responsibility of the machine. So therefore, every eligible person is thought to be included. We don't have time, but we can discuss this later if there are any questions. The second thing is that the eligibility criteria is given in Article 326. So that is the only definition of eligibility. You cannot go beyond that. So if you put the SIR under the test of eligibility, then you have to find out whether the special intensive revision exercise, the way it was carried out in Bihar and the way it is now being conducted. But since this is still work in progress, so you cannot have any data. But Bihar clearly has a conclusive data. So the question would be that out of 7.89 crore electors who were in the original electoral roll as it obtained on the 24th of June 2025, how many ineligible people have been excluded? And I want people to make a distinction between those who are excluded and those who are ineligible. Because a person who is shifted from one place to another, he is not ineligible as an elector. It is only that he should be registered in some other place. So the ineligibility criteria prescribed under Article 326, that according to me is the touchstone where you determine the eligibility or ineligibility of a voter. Even those who have died, they need to be excluded because they are dead, not because they are ineligible. So the purification of electoral roll, which is carried out in the normal process of annual revisions or summary revisions, that takes care of the shifting or the expiry of electors. Did you need a special intensive revision to wean out those electors? That's a question. And I think the most problematic aspect was the notification of 24 June 2025, where a phrase was used that the electors who existed in the electoral roll, they were divided into two groups, before 2003 and after 2003. And the phraseology employed was that those who existed before 2003, they have a probative evidence of eligibility, which is okay, but a presumption of citizenship as well.
उसका implication ये है that those who are after 2003, they have to establish their citizenship. Only then they will be admitted in the electorate. Now this was unprecedented because the Election Commission in the past has never used this phraseology, even though it's a fact that they undertook the difficult task of making sure that citizens were admitted in the electorate. In an ecosystem like India, where there is no conclusive documentary evidence or documentary proof given by the government to tell a citizen that this is the evidence you can use if you want to show your citizenship. Election Commission, nevertheless, in the last 75 years, tried to cover that aspect of eligibility and prepare the electoral roll. From 1951, the first electoral roll, which was, I think, close to 18 crore, it went up to 98 crores in 2024. So, I don't think that there have been allegations against Election Commission that it was very lax in employing this criteria of eligibility. So that is as far as the principles are concerned. On the process which was used, I think there were a number of questions. And I can go on for half an hour to explain what were the procedural infirmities. Because the fact that many of these procedures were modified during the course of the exercise, it shall show that the procedures were not thought through thoroughly. Otherwise, this is an institution which has a formidable reputation of employing standard operating procedures which are transparent, which are unambiguous, which are understood by the people easily. So, I think I'll stop there. And largely on account of, I would say, the lack of transparency, many of these questions have arisen. The last point I want to make is that I think it would have been very helpful for all of us and for the PCI if they had said that in 2003 in Bihar, when the last intensive revision was carried out, we used the following procedure. Now, we are modifying that procedure for the following reasons. Unfortunately, that 2003 procedure is not available on the website of the ECI. So it has caused a lot of confusion, although I am told that ADR was able to annex a copy of that procedure in their submissions before the Supreme Court. Thank you. Thank you so much for this enlightening talk. And there are many questions that have been answered, and still there are many questions that have come up based on what you have discussed. And as if I may just add a comment, and take the next our next speaker, of course. What you're saying is there's opaqueness and lack of transparency on the ground in terms of the procedural, in the way it was moving, but also at the level of planning itself, there was an opaqueness from what was earlier standard operating practices. So that is a very worrisome point to be at. So at this point, I would like to invite Major Verma, and sir, we know that you have taken it up in the Supreme Court. We would like to know from you what the steps that led you to do this, and what you expect in terms of verdict and going forward in the struggle for establishing credibility. And thank you so much. And my apologies once again. I'm going to make people wait. I'll quickly dive into the subject. So can you please? Okay. Better now? Yeah. Okay. So my apologies for being late. Can you speak like that? I'm a soft-spoken general.
Basically, see, so I think most of you must be knowing about India. And today, Here, I represent the organization, but basically we represent the citizens. We try to fight for the causes which we feel are very important for the citizens and voters and all that. And what we feel that I would say after the last election commissioner, Mr. Rawat, the people who have been appointed, there has been as we all know, there have been surveys carried out about the, how much people trust the election commission now, and that percentage is falling continuously. That is because of their opacity and not uncertainty. Like you mentioned in the beginning only, it's the job of people to ask questions, and democracy is all about debate, discussion, dissent, and all the peace. So, if the questions go unanswered, then there is a problem. Therefore, we thought that the way this thing has been ordered is unconstitutional, and I'll just read of area when we filed the petition. Just a second. Yeah. So the direction to this was filed in the Supreme Court, and we requested the direction to set aside the order and communication dated 24th June 2025, which Mr. Lavasa mentioned, and accompanying guidelines issued by the Election Commission of India to conduct special intensive review of the electoral rolls in Bihar as being in violation of Article 14, 19, 21, 325 and 326 of the Constitution of India and provisions of the Representative People Act, Electors Rules 1960. This was the main. And there have been, the hearings you are all aware, have been going on for the last several months. A number of hearings have taken place, and the last 3 hearings, it is the Election Commission which is now giving their version of story. So there have been a number of other applications which we have filed in the ongoing hearings. First was to direct Election Commission to publish the name of electors to whom notices are issued on its website during the SI exercise and during the claims and objection cases. This has not been done. Direct the ECI to set a deadline, publish a machine-readable list of electors whose names have not been included in the draft poll and the reasons for non-inclusion, so that the electors can file their claims within time. These are not done. Direct ECI not to determine citizenship of voters through SIR process and does not have the statutory authority to mandate or conduct a citizenship verification process. Alternate guidelines for BLO, ERO and AEROs to verification of citizenship. There is a that is the BLO or the ERO empowered to decide whether you are an Indian citizen or not. Direct the Election Commission to conduct software-based deduplication of electoral rolls and prepare a list of demographically similar entries and delete duplicate or multiple enrollments in the manner as provided in the Election Commission handbook on national electoral rolls purification in all the 12 states. I may also mention that during the process of the hearings, it has come out very clearly that the present way in which the SIR is being conducted, the Election Commission is not following its own guidelines and manuals of the past. About the 2003, Mr. Lavasa mentioned, they removed that guidelines from the Election Commission website. They are masters at doing that now. They remove CCT coverage. They what do you call those voter PVPAT slips. There was another case of ours going on about the publication of results of the elections. In that, the mandate is that till 6 months they have to preserve the VVPATs. When we asked them, they said they. So they started doing all these type of things. Hello. Then to direct the ECI to conduct a social audit for the purpose of enumeration as laid down in there. All these points which I am telling you being brought to the notice of
various hearings which have been going on. Direct the Election Commission to ensure that acknowledgement slip is given to all the electors who submit the forms. Direct ECI to publish names of electors to whom notices are issued on its website during the exercise and during the claims and objections phase, and in a clickable format so that people can see it, not done. This is as per the manual, para 11.3.2. Direct and of course on the date of submission of the enumeration and the main. दूसरा एक दो ना This is for the. Hello. Is it better? Hello. Okay. So the main judgment on which the arguments were based, and as you are aware, ADR was the first petitioner. After that, there were a lot of people who jumped on the bandwagon. There were political parties, there were state governments also, and individuals also. And one or two people also tried to justify the SIR, so they also jumped into the bandwagon. But the main case was Lal Babu Hussain versus ERO, 1995, 3 SEC 100, and Indrajit Verma versus Election Commission. This was the main case. This was the judgment held that the presence on the electoral roll is prima facie proof of voter eligibility, including citizenship, and the burden of proving otherwise lies on the objector. As you are all aware, there is a form 7 and then somebody has to fill that and then tell you, and then there is a process laid down. That process has to be carried out first by the Election Commission, and then the details are to be submitted to the government, the MHA, and then they are the ones who finally decide whether this guy is a citizen or a illegal. So the main thing which all the petitioners have said that it is not in the charter of Election Commission to establish the citizenship thing. And the other thing also, of course, was asked in the court also, that in all the election speeches it was said illegal, you all heard those. How many were found in Bihar? Those details are never published, not known. So we are not saying that they are not there. Of course there are illegals, but then tell the people if people are asking. So and the other important thing I have not mentioned is now they have published separate instructions for Assam, because they said Assam में NRC हुआ था. In those instructions of the Election Commission, it is very clearly mentioned that citizenship, finding the citizenship is not the role of ECI. It is there in their written instructions. So in one state it is not there, in the other states they are claiming that it is their responsibility. As far as the procedural things go, there are hundreds of the things. I mean, if I were to list out what all is going on, and most of you are aware, you are all journalists, so I don't want to. But the point is, which I wanted to mention was that this was becoming an exercise of disenfranchisement, exclusion, instead of the inclusionary process which had been followed pre-2014. Nobody is denying the fact that the purification of electoral rolls is very important. But I and in ADR we maintain that democracy is not only elections. There are a whole lot of other things. Election is just one part. And like our friend Dr. Qureshi always says, that if you manipulated the electoral rolls, your battle is won already before the votes are cast. So it is a very important exercise, there is no denying that. But then it has to be done in a transparent manner. They have to answer questions. The trend is not to interact with the citizens at all, voters. I mean, wherein the attitude earlier was to help the voters, make more and more voters come out and vote. Here we have got crores of people's names removed. And then in the court, the Election Commission lawyer says, not a single petition has been filed. Nobody
somebody has come with a writ petition. अरे वो रोटी रोजी कमाएगा अपना के अपनी writ petition file करेगा. He doesn't have time to fill the enumeration form. He doesn't have the wherewithal or the capability to fill the enumeration form. You made it so difficult. Online submission, 12 documents. After such a great effort, our lawyers managed to get RR as the 12th document. The judges were not agreeing to that also in the beginning. But when it was proved that it is creating such a big issue for the poor people, now what is happening? Large number of women are being disinfected. Why? Because they got married. Their names have changed, surnames. Now they did some algorithm and the deduplication software also in the court they admitted is not functioning properly, so we stopped. On one hand, he said digitization, चाहे भी क्यों तो digital उससे करो. It's a different matter that for political funding they don't use it. But point which I am trying to say is that while the enumeration process is on, for example in Bengal, they use some new algorithm. Then after a few in writing the CM West Bengal says it is malfunction. But they have made a huge list of suspected people. Why? Because spelling mistakes are there. The names can't be translated from Bangla to English or whatever method they were using. There are so many anomalies, so that they had to withdraw that. Now, what do they do with the people in the suspected list? There are so many people whose parents' names are not there or whatever, So, those are the practical difficulties. Now, the last 3 hearings which have taken place, the Election Commission has started this thing, and basically what they are saying is very briefly, I'll tell you. Firstly, they say Election Commission has the right to determine citizenship. They are asserting that. Secondly, they say the job of determining the illegals and taking action against them is that is of the commission, not us. Burden of proof. Like earlier, when the intensive reviews were carried out, this is the first time that an entirely de novo approach is being carried out where the entire voter list has been scrapped and new ones have been made. Earlier, the enumerator used to go to the house with a form which was already filled. They used to just verify from the family and check so and so is alive, migrated, whatever, fill it and submit it. Now the burden is on the citizen and all the citizens. And you have heard eminent people also. Amartya se humko पूछ रहे. Chief of Naval Staff settled in Goa, Admiral Prakash, who is a very respected person, 82, 83 years old. They are asking him to come to 18 kilometers away where he has to go with his aged wife. What is going on? So, I think I'll wind up because I think I can go on and on about this, but I think I'll hand over to you. You would wind up. Aditi, the earlier mic is better. This is very muffled. Hello, yeah. You need to just keep the mic before. Sir, now you have the power. So, thank you so much. And thank you for the मैं एनडीए के बिहार पे भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो 50 साल तक फील्ड में रहा है और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी चाहिए, उसके लिए प्रदर्शन किया है, जुलूस निकाले जेल में गए, तो मैं उसके यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। मैं जनता दल में हूँ, इसके दोनों हाउसेस का पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूँ और इस डिबेट का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। जो सवाल अभी मेरे भीतर और जो इस समय घूम रहे हैं दिमागों में भी और समाचार पत्रों में भी, डिजिटल मीडिया में, ये सवाल कोई आज के नहीं,
एक जमाना वो भी हुआ करता था जब मैं प्रोटेस्ट करता था, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता, वो किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था। जैसे मेरे कानपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे त्रिवेदी जी, वो चुनाव आयोग के हेड हो गए। मैंने वो दौर भी देखा कि मैं राज्यसभा में यहाँ बैठा हूँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे थोड़े दिन पहले वो मेरे भाजपा थे, मिस्टर MS के, और वो मिनिस्टर भी रह चुके थे। तब अकाउंटेबिलिटी भी ठीक थी और मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट थी। जो ADR के इशूज हैं उनसे मैं जरूर अपनी सहमति रखना चाहता हूँ। शोकर साहब नहीं है, मेरा उनके लिए ट्रिब्यूट भी है, उनके साथ मैंने कई सालों तक काम भी किया है। 1971 के बाद, मेरी उम्र के साथ यहाँ कोई नहीं है, चुनाव में महंगापन शुरू हुआ है। टिल 1967 1, 2, 3, 4 जीत से लोकसभा के जो उम्मीदवार थे चुनाव लड़ा। हमारे एक नेता थे, मैं आई वाज इन लोकल, बीजू पटनायक, उन्होंने एक किस्सा सुना है। And he was very close to Mrs. Gandhi also. They were together in Congress. बीजू बाबू ने पूछा मिसेस गांधी से कि भाई ये तो आपके खिलाफ बड़ा जनमत हो रहा है, हाउ यू विल एबल टू विन द इलेक्शंस? तो देखा बीजू मैं चुनाव को इतना महंगा कर दूंगी कि मेरे सिवा कोई लड़ नहीं पाए। एंड इट हैपेंड इन 1971। आज हम प्रधानमंत्री पर भी, गृह मंत्री पर भी, मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हैं। हम भूल जाते हैं 1977 का चुनाव, 1971 का। मैं कम उम्र का वॉलंटियर था और चूंकि नॉन कांग्रेस मूवमेंट से मैं निकला हुआ था, मैं रायबरेली चुनाव में गया जब राजनीति वर्सेस इंदिरा गांधी चुनाव था। जूनियर जस्टिस जगमोहन लाल ने क्या कहा? शराब, पैसा, सरकारी फैसिलिटी का दुरुपयोग, डिफेंस का दुरुपयोग, जहाज का दुरुपयोग, डाक बंगलों का दुरुपयोग, ये सारे काम हैं। और जुडिशरी, शाम को जब हम मिसेस गांधी का इस्तीफा लेने के लिए सब्जेक्ट रोड पे गए एक नंबर पे, तो अंबिका सोनी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहाँ पे 5000 थे यूथ कांग्रेस के लोग और 5000 पुलिस, और हम 100-150 लोग। एक नारा लगा था उस जमाने में, सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। हमने जो ही नारा लगा तो हमारी पीठ पर डंडे लगे। और जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस मुर्दाबाद, CI अगेंस्ट मुर्दाबाद, उसकी भी नारे लगे। तो ये कोई आज की बीमारी नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सिस्टम को। और उस समय अशोक लवासा जी जैसे सज्जन पुरुष भी पैदा नहीं हुआ करते, ये उस दौर की बात। तो बिहार की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं चूंकि बिहार से राज्यसभा का MP रहा हूँ, 60 लाख लोगों के नाम कटे। लेकिन अशोक जी, एक भी आदमी ने आकर के चुनाव के दौरान कंप्लेंट नहीं सड़क पर। और दूसरा, मैं सारे मित्रों को बताना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है। 2005 से पहले क्या हालत थी बिहार की? 500 से लेकर के 1000 के बीच में तो लोग मरते थे। अगर आप जैसे मेरे किसी मित्र ने उस जमाने में अगर कवर किए हुए चुनाव, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पहले दिन शाम जाकर के जो एंथ्रेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पूछते, अरे किसको वोट दे रहे हो? सरकार जिसको आप कहेंगे। अच्छा ठीक है, तेरी वोट पड़ेगी और तू कर मतदान। और बूथ कैप्चर होते हैं। आप लोगों ने जितने सुधार किए हैं या इस बीच में जितने सुधार हुए हैं, बहुत बढ़िया। एक तो बड़ी बीमारी अशोक जी जो मुझे लगी, एक तो आपकी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मशीनरी नहीं। जो सूबे का मुख्यमंत्री है उसका जो प्रिय अफसर है वो स्टेट का चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और जो बगैर पैसे के काम नहीं करती आजकल मशीनरी, वो सारी नंबर 2 उसके अंडर में काम कर। तो इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकते। पटवारी कौन है? उसको डर है कि मैं उसका ट्रांसफर कर दूंगा। और मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ा। पहला चुनाव लड़ते ही मैं धरने पे बैठ गया था। और 74 में मुझको याद है, मेरे नेता थे चौधरी चरण सिंह। हम कभी ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता हमें रिजेक्ट कभी। और यही हाल बिहार का है। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता,
2005 से पहले कैसे चुनाव होते थे, बिहार में क्या क्या होता था। बिहार में बूथ के जाने के लिए सड़क तक नहीं थी। अब तो जो मेरिन ड्राइव वो बॉम्बे है, उससे अच्छा वहाँ पे बना हुआ। सॉरी सर, सर आज क्या हो रहा है? नहीं, पहले क्या हुआ? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन क्रेडिबिलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मतलब आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं करती। हमारे अपने नहीं, हम बहस नहीं कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा दौर है, ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले उसमें सब कुछ सही था। अभी मौजूदा दौर में हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले कभी इतने कंट्रोवर्सी का बॉडी नहीं रहा। अभी जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी आपने बिहार का इलेक्शन देखा और उसी के बाद से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब दूर पकड़ी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एज पॉलिटिकल एंटिटी, एज ई अलाइड, are you satisfied with election commission functioning? We may discuss, what happened in the past, but are you satisfied the way election commission is working currently, and how SIR is going on in another 9 states after Bihar? Are you satisfied with functioning of election commission? आपने मेरे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे चला है। पीछे चले मैं जवाहरलाल जी पे जाना चाहता था, उससे बढ़िया चुनाव कभी नहीं। मैं उससे जाना चाहता था, लेकिन आज की बात करें, आज भी मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं उस सिस्टम का शिकार रहा हूँ, तो मेरी बात सुनिए। ये प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आप बात नहीं पूरा इतिहास आप बताएंगे। Sir, are you satisfied with the functioning of election commission right now? Right now, yes. इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उस दौर में भी, इस दौर में भी मैं चाहता हूँ। नहीं तो हो नहीं रही ना, एक ही लाइन में बोल दिया। लोगों जिंदे लोगों को मार रहे हैं और जिंदों को वोट दे रहे हैं। मैंने बिहार का आपसे बताया, एंड आई चैलेंज यू इन बिफोर ऑल द जर्नलिस्ट, एक भी आदमी का एफिडेविट दीजिए 60 लाख लोगों में जिसने कहा हो कि मेरा वोट जो है नहीं पड़ा है। एक यूपी में 18,000 यूपी में बिहार की बात करें। आप तो यूपी से ही आते हैं सर। कोर्ट से डरते हैं, अगर एफिडेविट दे दो कोर्ट से भी तो डरते हैं। यूपी में तो मुख्यमंत्री कह रही मेरी समर्थक की तो आप सेटिस्फाई हैं सर? आप योगी जी के साथ हैं नहीं? ना, मैं तो केसी त्यागी के साथ और आपके साथ। मैंने पहले कह दिया कि मैं एनडीए का स्पोक्समैन के रूप में यहाँ पर मैं उसका भी ध्यान दे रहा हूँ, और आप अखिलेश यादव जी का भी कह देता हूँ। इतना प्लीज इस तरह से कोई मैं कह रहा हूं कि जो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सर सवाल ये है कि इस वक्त ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि नहीं एट प्रेजेंट? मैं ये कह रहा हूं कि मैं काफी दिनों से अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं कि इसको अकाउंटेबल होना चाहिए, इसको और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब अभी नहीं है ना सर? अभी नहीं है ना, इसीलिए और जरूरत है। मुझको अपनी बात कहने की आजादी है नहीं, मुझे लगता शायद नहीं है। आपका इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि इसको और अकाउंटेबल होना चाहिए, इसको और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कमियां हैं, उनको भरपूर करने की जरूरत है। ये पहले से भी गड़बड़ है, आज भी बहुत ठीक नहीं है। जी यही हम जानना चाहते हैं। और एक जो एडीआर के सवाल हैं, आप इसके आप एसआईआर को लेकर बहुत चिंतित है। जो इतने करोड़ों रुपए के चुनाव है, इसको लेकर कभी चिंता व्यक्त नहीं करते। पूरा लोकतंत्र जो है पैसे वालों के हाथ में चला गया, उसको लेकर आपकी चिंता ही नहीं। पहले बूथ कैप्चर होते थे और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो स्ट्रॉन्ग थे उनका कब्जा हो जाता था। अब वीकर सेक्शन के लोग भी वोट डाल रहे हैं, आप कह रहे फिर पर्ची उपा दो, तो पर्ची किसी गरीब के घर नहीं जाएगी। आई एम सॉरी टू से, एंड होपफुली अशोक जी भी लगेगी। Can we start question answer session? No, I'm just saying that one by one you can ask question, and Umesh will give you mic. Umesh, दूसरा mic. I wanted to say
I would like to thank all the panelists and Mr. K.C. Tyagi, please do not feel upset because this is a forum for asking questions and yeah, so the questions have come before your topic ended, but please take it in a healthy way because this is the way that we go forward. So in that spirit, I would hope that we will set the floor for the question answer session and whatever you do need to say, whether in whichever capacity and role that we see you in your public sphere and your own personal experience, you can of course add to it. But we see you in a particular public forum and as a political figure. So we do expect that, and please feel free. I mean, the floor is yours. So over. लेकिन मैं अगर पुराने दौर की किसी बुराई को जिक्र करता हूँ जो अच्छी नहीं थी और आज भी उनका चलन है, इस पर भी अगर आपको ऐतराज है फिर तो यही है कि टॉपिक यही है। मैं कह रहा हूँ पुराने दौर में इतनी लड़ाइयाँ की हैं लोगों ने, आज आप लड़ेंगे आज आप लड़ेंगे। I appeal everyone to maintain silence. मेरा क्वेश्चन अशोक लवासा जी से है कि केसी त्यागी जी ने अभी बोला था कि एफिडेविट नहीं आए बिहार में, अगर नहीं आए तो क्या किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वन पर्सन वन वोटर राइट में क्या ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा ओनर्स अब सिटीजन के ऊपर क्यों डाल दिया गया है कि एफिडेविट जाके जमा करें। पहले ऐसा होता था कि बीएलओ घर में आते थे, वहीं पे कागजात देखते थे और होते थे। तो क्या ये आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? और दूसरा, जो इंक्रीजिंगली क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की कम हो रही है और वोट चोरी के भी उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, एक तरह से वोटर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ से कहीं सिस्टम के जो क्रेडिबिलिटी, इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी? आई थिंक नॉट, बट व्हाट इज योर व्यू? बाद में 2-3 क्वेश्चन ले लो। It's a long, in-depth question, sir. नहीं, जो सवाल आपने पूछा, I think I did say कि जिम्मेदारी हमेशा से संस्था ने अपने ऊपर ली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्टोरल रोल में लाएं, और इस वक्त जो उत्तरदायित्व लोगों के ऊपर डाल दिया, ये एक डिपार्चर है पहले से, और मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत एक्सट्रीम मिसाल देना चाहता हूँ कि फर्ज करिए कि 1951 में जो इलेक्टोरल रोल बना था उसमें किसी इलेक्टर का नाम था, क्योंकि वो उस वक्त 21 साल का था, और जब बिहार में रिवीजन हुआ तब तक वो शख्स जिंदा है, 95 साल का होगा, और सारे इलेक्टोरल रोल में तब तक उसका नाम रहा है। लेकिन उस वक्त प्रक्रिया ऐसी बनाई गई अब 2025 में जून में कि अगर किसी भी कारण से वो फॉर्म वापस नहीं जमा करता तो उसका नाम हट जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन फेयर तो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी जो इस देश में पैदा हुआ है और फर्ज करिए कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, और फर्ज करिए कि वो स्कूल भी नहीं है और उसके पास जमीन भी नहीं है और उसने किसी सरकारी स्कीम का कोई फायदा नहीं उठाया, तो क्या वो वोट देने का अधिकार नहीं रखता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 18 साल से ऊपर है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, किसी कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तो क्यों भी उसका नाम नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए शुरू से, और आप ये देखिए, सॉरी आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम, कि जब पहला इलेक्टोरल रोल बना था उस वक्त तो सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और तभी जब संविधान लागू होगा, त्यागी जी इसको मेरे से अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ आर्टिकल्स थे संविधान के जो 26 जनवरी 1950 से पहले से एनफोर्स कर दिए गए। उनमें आर्टिकल 6 to आर्टिकल 10 which deal with citizenship, they were in fact invoked, enforced before 26th of January. The election commission itself was constituted before
26 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि उस माहौल में जब सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब लोग इधर से उधर जा रहे थे, माइग्रेशन हो रहे थे, तब भी एक सिस्टम ऐसा अपनाया गया जिसमें 17 करोड़ और कुछ 70 लाख के करीब लोगों को एनरोल किया। और ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिपोर्ट पढ़ें पहले इलेक्शन की, तो उसमें आप देखेंगे कि उस वक्त सेंसस के रिजल्ट्स नहीं है। सेंसस का रिजल्ट आया है बाद में, इलेक्शन जब पूरा हो गया और जब मिलान किया गया कि सेंसस में जो 21 साल से ज्यादा लोगों की तादाद दिखाई गई और उसका कंपैरिजन इलेक्टोरल रोल से किया गया, तो ये पाया कि शायद 61 लाख लोग ऐसे थे जो इलेक्टोरल रोल में नहीं किसी वजह से शामिल हो गए। तो ये तो जाहिर है कि जिम्मेदारी तंत्र की है और वो तंत्र हमेशा से इसी तरह काम करता है। सर मेरा एक सवाल है सर से, ये बोलते कुछ है, मीडिया में बहुत फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में कुछ कागज देते हैं तो ये कुछ उल्टा ही बोलते करते हैं ये। तो इसमें जनता भ्रमित होती है, सिर्फ जनता कैसे करे, क्या उनके तक सूचनाएं नहीं पहुंचती, सूचनाएं ये झूठी पहुंचती है। सर्वेश किससे है सवाल? कोई भी दे दे, वैसे ये वाले सर है ना, ये वाले जो आप बात कह रहे हैं, ये SIR की जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। मैंने बताया था कि बहुत लंबी लिस्ट है जो मैं बता सकता हूँ। अभी भी जैसे हो रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज पास किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और वो तो उन्होंने एडमिट भी किया है, लोगों ने बताया है जो EROs हैं कि रिटर्न में जो ऑफिशियल ऑर्डर, आपको मालूम है कि कोई भी सरकारी संस्था को they have to give orders in writing so that later on transparency, accountability can be established. अब अगर सारा कुछ व्हाट्सएप पे ही चल रहा है, वो कहते हैं हमें ये भी नहीं पता ये दिल्ली से आ रहे हैं कि CEO पे कॉल कर रहा है, और बीच बीच में चेंज होता रहता है। अभी जैसे फॉर्म सबमिट करने की जो डेडलाइन थी वेस्ट बंगाल में, उसको व्हाट्सएप के जरिए एडवांस कर दिया गया। तो अब आप ये सब कैसे कर रहे हैं? अभी जनता को कैसे पता लगेगा कि भाई अभी टाइम कम हो गया है हमारे को ये करना है? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी कई एग्जांपल, अगेन अभी आजकल की न्यूज़ में ही था कि इतनी सारी लेडीज हैं वेस्ट बंगाल में जो कि वहीं पैदा हुई हैं, शादी हुई है, उनके हस्बैंड्स नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, या तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या हुए हैं, और उनको पेंशन भी मिल रही है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनका नाम नहीं है कहीं। तो हाउ कैन यू से कि दे आर नॉट सिटीजन्स? तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं व्हिच नीड अटेंशन, बट द प्रॉब्लम इज कि जवाब नहीं मिलता। क्या करे जनता, बहुत परेशान। So my question is, I'm Preeti Prakash, independent journalist, and my question is to Mr. Lavasa. First question is that we've seen a few months back the press conference of the Chief Election Commissioner. The entire, I think, country was noticing the absurd answers that were being given, many of them. For example, वो video footage कैसे दिखाई ladies का, which was then contested by the opposition. Also that according to a new rule, the CEC and the EC is above, the immunity to them above law is a real concerning question. So one is, how do you look at it, particularly maybe if we speak of your time and now when it is again that. And my second question is to Anil Verma. Rahul Gandhi has just he's come out with a lot of vote chori lists, lot of them, and he's named so many names, and he's also said that hundreds as they are deleted and fake names. So how is ADR? Is ADR taking it in any other way? What are you planning to do about that? Thank you. So as far as the immunity question is concerned, I think it's
Yeah, as far as the immunity question is concerned, I think this is an extraordinary protection that has been provided. I am not aware if there is a comparable protection available to other public institutions or public servants. In a democracy, I think accountability is paramount. And therefore, this kind of legal shield, to my mind, should not be available. Because if a right decision has been taken, then a right decision also has to meet the test of it being defended before a court of law. Yes. The second, what was your other question? Thank you, sir. So, we are not going into the issue of vote chori, but the question is still this, that, instead of making fun of his presentation and the details which he is given, Election Commission to come out and answer the thing. That he is wrong and these are the things. जैसे कि proof नहीं दिया तो machine readable form में आपने नहीं दिया तो कैसे check करेंगे? So all those issues are there, but we are not addressing this issue as vote chori. That is, I think, for the political parties to fight it out. We don't want to get involved in that. And I feel all the opposition parties are not doing enough in this whole matter. That is grave, this thing. And I also want to respond to the political funding thing. ADR sir, Tyagi sir, with due respect, बहुत कुछ कर रहा है उसके मामले में. हम हर एक चीज में लगे हुए हैं. इलेक्शन रिजल्ट से लेके आपको मालूम ही है पिछला जो इलेक्शन रिजल्ट निकला था 543 कंस्टिट्यूंसी में से सिर्फ 5 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें कि वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड मैच्ड. आप सबको पता होगा उसके ऊपर भी हमारी पिटीशन है. और उससे पहले की एक पिटीशन है जो सुन रहे थे वो मिस्टर खन्ना जब चीफ जस्टिस थे फिर वो रिटायर हो गए, वो बीच में रहते थे. जबकि उन्होंने उससे पहले वाले इलेक्शन का भी बोला था कि काउंटिंग सिस्टम में इतनी क्या आफत है कि आपको उसी दिन रिजल्ट निकालना है. और वो इलेक्शन कमीशन राइटिंग में देता है दीज आर प्रोविजनल रिजल्ट्स. वो गवर्नमेंट तो बन गई, शपथ ले ली, फिर क्या उसका प्रोविजनल और फाइनल रिजल्ट का मतलब रह जाता है. वो हियरिंग नहीं हुई. और ये जो कि लोक प्रहरी ने PIL दाखिल की है अबाउट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स is absurd. I mean, this rule which they have inserted quietly. किसी को नहीं है ऐसे. कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, हम आर्मी वाले आपको पता है, आप भी फौजी भी भाई, रिटायरमेंट के बाद भी अगर कुछ हो पकड़ के आपको जेल में डाल सकते हैं. ब्यूरोक्रेट के ऊपर भी वो कितने केसेस चल रहे हैं ना, पोल स्कैम ये वो सबके ऊपर केसेस चल रहे हैं. So how can you be immune किसी के WhatsApp पे मैसेजेस हो रहे हैं आजकल? I think that's it. Sir, good afternoon. I'm Shikha Salaria from Musics and the Sunday Garden. I have 3 quick questions and pointers I'm sure Jan will be able to answer as well as Lavasa sir. First of all, I want to point out the process because Lavasa sir mentioned very rightly that the SIR in concept is not a problem, it's the process that is haunting people. Now there are 3-4 points. Number 1 is about the EROs. So in West Bengal, the State Civil Services Officers Association has rightly pointed out and written a letter saying that the centralized portal of the ECI is generating pre-filled notices, and these notices mean that deletions are going to happen automatically. Number 1, are we including this in your in the arguments that you're taking up in the Supreme Court? Because this is very important. If the software itself is deciding who is going to be in the voters list and who's not, it's a danger for democracy. Number 2, you very rightly pointed out about the officials sending instructions via WhatsApp. Now these instructions include two very important instructions. One is for the BLOs and EROs to mark voters absent even before the formal deadline to for their inclusion in the draft list is getting over. So you can remove the name of the voter even before the deadline for their inclusion. That's a grave danger, sir. Secondly, the second instruction is that the house visits that they have to do,
3 house visits that the BLO has to do, their time limit has shortened, and which is why the BLO is committing suicide, sir. Because अगर उसका time आप 3 home visit करने में उसको 3 बार जाना है, वो बेचारा मरेगा नहीं तो क्या करेगा? किसी के घर में शादी है जो यूपी में हमने देखा, that is the problem, that people are being forced to do it so quickly, so speedily, that they have no other choice than to commit suicide, sir. So are we, the ABR, kudos to your organization, sir, you're doing fantastic work, but are we including this? I'm sure you're looking at it. Also, if Ashok Lavasa, sir, can also answer on, the plight of the BLOs and the pointers that I've mentioned about system-driven deletions, number one, because that is something that even the BLOs have no, they won't be able to take care of. Secondly, the way voters are being made to, the officials are passing instructions on WhatsApp, asking them to delete voters' names even before the deadline for their inclusion is getting over. Plus, the BLOs, the short time limit for them to complete the house visits, sir. See, these issues everybody is aware, and there are a number of deep dive journalists who are doing like Reporters Collective have come out with a number of reports and so on. So everybody is aware of these things, and like I told you, the petitioners hearings are over. Right now, the Supreme Court is hearing the Election Commission Council, and the hearings are ongoing. I think the next one is on Tuesday. So maybe after that, all these points are being noted, and they will be covered in the future hearings, I'm sure. You see, the death of any individual while performing public duty is unfortunate, especially if that duty imposes on that person undue expectation and a very tight timeline. Now, I have no reason to say that the death have happened because of this, but we need not go into that. I have already said that the rational question to ask is that whatever you are attempting to achieve through this very comprehensive process of SIR, can that not be achieved by a simpler process? That is my question, which does not involve millions of people the way they have been involved, which does not entail on the electors the responsibility of subjecting themselves to an identification parade the way in which it has been done. So the question is that all these exclusions that are being made, अगर आपने शिफ्ट कर दिया है अपना रेसिडेंस, अगर आपकी डेथ हो गई तो प्रोविजन है हटाने का आपको, और जो समरी रिविजन हर साल होते हैं उनका मकसद ही, लेकिन एक जो प्यूरिफिकेशन का अगर आप इसको ठीक से समझें तो इलेक्टोरल रोल में खामियां क्या है उन्हीं को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है। तो इलेक्टोरल रोल में 3-4 किस्म की खामियां होती है या कमियां होती हैं। एक तो यह है कि भाई कई लोग जो एलिजिबल हैं उनका नाम शामिल नहीं किया, दूसरा यह है कि आपका एक से ज्यादा जगह नाम इलेक्टोरल रोल में है, तीसरा यह है कि गलत नाम लिखा हुआ है, और चौथा यह है कि इनएलिजिबल नहीं हो तब भी आपका नाम शामिल है। यही 4-5 किस्म की खामियां या कमियां हो सकती है इलेक्टोरल रोल में। तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इन कमियों को दूर करने का, दुरुस्त करने का कोई आसान तरीका है? और मैं ये समझता हूं कि अगर आप टेबल टॉप एक्सरसाइज करें, ऑडिट करें इलेक्टोरल रोल्स का, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ सकती है। उनको हटाना कैसे है उसका एक सिस्टम है, क्योंकि लीगली जब किसी शख्स का नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया तब आप उसको बिना नोटिस दिए उसका नाम नहीं हटा सकते। और आपको ये जान के शायद ताज्जुब हो कि इवन इन द इवेंट ऑफ डेथ द प्रोसीजर व्हिच इलेक्शन कमीशन ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो वाज टू इशू अ नोटिस कि भाई कोई गलत तो नहीं बता दिया किसी ने कि किसी की डेथ हो गई, तो वो नोटिस इशू करते थे सो दैट
there is consultative process. तो ये जो tabletop exercise है deduplication, and this is not something that is being done now. For I think about 15 years or so, Election Commission has tried to do deduplication in a variety of ways. अलग-अलग किस्म के सॉफ्टवेयर, क्योंकि आसान नहीं है. किसी का नाम, मेरा ही नाम अगर कहीं पे ASOK लिखा है, अशोक, और मैं वही इंसान हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता. तो फोटो मैचिंग, नेम मैचिंग, पेरेंटल मैचिंग, डेट ऑफ बर्थ मैचिंग, देयर आर डिफरेंट फिल्टर्स व्हिच आर एम्प्लॉयड. तो लेकिन फिर भी करते थे, और ये डेटा भी अवेलेबल है कि कितने लोगों को डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आइडेंटिफाई किया गया. डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आप डिलीट नहीं करते, ना करना चाहिए, ना किया है. आइडेंटिफाई करके फिर जो प्रोसीजर है उसके तहत आप उसको डिलीट करें. तो द मोमेंट यू अप्लाई अ डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, you may be able to identify duplicate entries. One person entered in more than one place. Incidentally, ये जिम्मेदारी इलेक्टर की है एज पर लॉ कि मैं एक से ज्यादा जगह नहीं अपने आप को एनरोल करूं, और ये एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू लॉ. बट इलेक्शन कमीशन जनरली हैज ऑलवेज टेकन अ व्यू, इंडल्जेंट व्यू, कि कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा जगह किसी ने कर भी लिया तो वोट तो हम इंश्योर करेंगे कि एक मिले. तो दे हैव बीन वेरी एमिकेबल in the way they have handled. So the question is, the same results you can achieve by a simpler process, including removing ineligible. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा किसी के आगे सर, क्योंकि सर आपने मेंशन किया था बिहार के बारे में. मैं बिहार में गई भी थी और वहाँ पे एक लोगों की कंप्लेंट ये थी कि हमें बहुत कम समय दिया गया और जो डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए बोला गया, क्योंकि ADR अपना जो फाइल कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो आधार कार्ड का भी जो डिसीजन था काफ़ी देर बाद आया था. उसके दौरान जो लोगों को जो हरासमेंट हुई है सर, उन्होंने ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोला भी है कि हमें जो डॉक्यूमेंटेशन निकालनी पड़ी उसकी वजह से करप्शन पड़ा है, क्योंकि कई चीज़ें जो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे, जो गरीब लोग थे वो डॉक्यूमेंट नहीं निकाल पाए, उनको अपने तहसील में जाकर के निकालने के दौरान भी बहुत पैसे खर्चने पड़े हैं सर. तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी जो एक्सपेंस की बात आप कर रहे थे वो भी बर्डन है इलेक्टर के ऊपर? देखिए, बिहार को लेकर के चुनाव होने से पहले लवासा जी एग्री करेंगे, SIR को लेकर के हल्ला गुल्ला शुरू हो गया. उसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ चीज़ें जेन्युइन भी रही, लेकिन आपको ताज्जुब होगा जान करके कि जो वहाँ मेन अपोजिशन पार्टी CPI ML के वर्कर तो काम कर रहे थे SDF, लेकिन जो मेन अपोजिशन पार्टी थी उसके वर्कर्स, उसकी BLOs, अब जैसे बंगा है, We will disagree with ममता, उसका एक वर्कर लगा हुआ दिन और रात इस काम पे भी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो हो रहा है उसका मुकाबला करे. वहाँ कुछ था ही नहीं. जो BLO थे, जो उसके RJD के वर्कर थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया. माले के वर्कर काम कर रहे थे. तो जो लिथार्डनेस ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो भी एक कारण होता है इसमें बढ़ावा देने. मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा दूसरा वही सवाल है जिसका आप लोग नाराज हैं. वो मेरा सवाल ये है कि RJD जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी मे बी माई पार्टी, जो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है तो हमें SIR पे ध्यान लगाते हैं. वहाँ फ्री फेयर पोल हुआ, एक भी कोई पत्रकार बताया कि बूथ कैप्चर हुआ या कोई और किसी किस्म की बेईमानी हुई, लेकिन चुनाव से पहले ही SIR को लेकर के और वहाँ पे जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ पर भी कोई शिकायत उस तरह की नहीं आई कि इनकी वोट इकट्ठी. नहीं सर, ये तो शिकायत आई है कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं था, हमें तहसील में निकालने के लिए समय नहीं मिला इतना, क्योंकि बिहार का इतना शॉर्ट टर्म निकाला. एक सेकेंड शिखा एंड आफ्टर दैट जी, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है. अब हम आप तीनों जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे ADR है, ADR सारा डाटा इकट्ठा करता है,
लेकिन अगर एडीआर चुनाव आयोग से तालमेल करके चुनाव से पहले कैंडिडेट का सारा बायोडाटा मतदाताओं तक पहुंचाने का काम करे तो जनता जागरूक होकर आपराधिक छवि के लोगों को न जीते, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल रुके। लेकिन एडीआर इस दिशा में कुछ नहीं करता है जहां तक मुझे नॉलेज है। चुनाव आयोग अपना आधार नहीं, एडीआर के पास इतना नहीं, एडीआर के पास इतना पैसा है। लवासा सर, आपसे ये क्वेश्चन है। आप कमिश्नर चुनाव आयुक्त थे, वहां से लेके आज तक जो आदर्श आचार संहिता होती है कैंडिडेट को दी जाती है, उसका अभी तक ठीक से क्रियान्वयन नहीं होता, ऐसा क्यों? As far as I know, ADR is a voluntary organization doing fantastic work, and I want to salute Jagdeep Chokar, who has left us. Yes. He has been a fantastic person who's dedicated his life. So more power to ADR. Now I just want to say one thing. Can I just make a factual correction? Because आपने कहा ना कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके बायोडेटा या जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको तो as per order of the court, and that order also has come because of a petition. All the credentials, they are disclosed, they are put on the website, and there are instructions of the Election Commission based on Supreme Court orders that political parties have to publish the criminal or any antecedent provided by the candidate in a local newspaper and also on local media. पब्लिश नहीं होता है। नहीं, ये मतलब मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि ये अगर कोई नहीं करता तो ये कानून का उल्लंघन। ये त्यागी जी बता देंगे। Okay, can I just say something? As part of my research in Verma, I was researching India's freedom fighters, and I found to my horror that there were several millions of Indians who were stateless. Some of them are India's freedom fighters. Now, being stateless means that they don't have a right to take up a job, they don't have the right to buy or sell property, and they cannot move inside Myanmar without permission. They exist on something called Foreigners Registration Certificate. Their situation is so bad that they cannot even express themselves. Now, drawing an analogy to what is happening, we have got under SIR, we have 6.5 million people who have been excluded. What is going to become their future? They want to disenfranchise people, but उनका future क्या होगा? वो आप जाइए देखिए. I met one man, Chinaya, who was a freedom fighter. He was living, he was blind with poverty. He was so poor, I cannot tell you. I think Sagri is asking people who are excluded, what is their future? Yes. And I also want to add into this, तीनों पैनलिस्ट से मैं पूछना चाहूँगी, क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कैरी आउट सीए इन disguise because kind of revision is happening. We hear from all the states where this exercise is going on that particular group, people from particular group are excluded. They don't know how to go about it. तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस सीए का भी एक एक्सरसाइज चल रहा है? इसी में मेरा एडिशन है। उत्तर प्रदेश में 2,30,00,000 वोटर काटे गए, 92 लाख तमिलनाडु में, 78 बिहार में और अभी पश्चिम में। आप 4 करोड़ के आसपास लोगों को निकाल दिया। 4 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, उनका क्या होगा? मेरा तीनों से सवाल है। I also have a question to all the three panelists. Is it okay? Yeah. So I'm adding to what Anil is saying and what Aruna is saying. And here we are talking, all of you are doing excellent work in different spheres, judicial and, at the commission level, and bringing that out to the open, and you're giving political, analogy as to what happened.
I want to know from you, what do you expect from the political leadership in this country to answer these questions, to set things right, and what is the outcome? Because sunwai kahan ho? All of this is information, facts, it's a work in progress. Democracy is work in progress. But ultimately the buck stops with the elected people being elected. So what is your expectation from this? Where do you see it? मैं आपके स्टेटमेंट का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से पक्ष में और विपक्ष में संवाद बंद हो, और संवाद अगर पहले जैसा हो, जैसा पंडित नेहरू के टाइम पे था या बिहारी वाजपेयी के टाइम, तो इन समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। रूलिंग पार्टी ये मान के चलती है दैट दे आर ऑलवेज राइट, और अपोजिशन ये मान के चलता है कि वो कभी ठीक हो नहीं सकते। इसीलिए जो संवाद है उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। उनको बैठना चाहिए, बातचीत करना है। अब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा, आई एम सॉरी, पहले दिन ही वॉकआउट हो गया। मैं पार्लियामेंट उस कमेटी में भी रहा हूँ जो सुबह 9 बजे पूरे दिन का कार्यक्रम तय करती है। उसमें भी अगर कोई चीज़ तय होगी है कि डिबेट हो, तो डिबेट नहीं होगी। तो अपोजिशन पार्टी को, रूलिंग पार्टी को पहले की तरह से या पहले से भी और ज़्यादा डायलॉग में जाना चाहिए बजाय कन्फ्रंटेशन के। और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह में भी जाते हैं, देखते हैं उस तरह की जो व्यवस्था है। डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी कई बिल पास होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, माइनॉरिटी के बाद भी, क्योंकि जो मेजोरिटी के लोग थे समझते थे कि बिल ठीक है, यहाँ तो जो सही हो या गलत हो, इस तरह की परंपराएं कमजोर पड़ गई हैं। लिहाजा मैं बहुत रेस्पेक्टफुली आपसे कहना चाहता हूँ, एज ए पार्लियामेंटेरियन, मैं जब पार्लियामेंट में आधी मिनट और लूँगा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी थे, चंद्रशेखर थे, इवन राजीव गांधी थे, सोमनाथ दा थे, अपने ये जो होम मिनिस्टर बने थे सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता थे, जो मरते टाइम तक होम मिनिस्टर होते हुए वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे। मैं पार्लियामेंट की उस कमेटी का मेंबर। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप काफी हिस्ट्री में चले जाते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप करंट मतलब एनडीए के इतने सारे वोट कट गए, उस पे बात कर, आज क्या और आज की तारीख में जैसे आपने 4 करोड़ वोटर डाल दिया कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं, और आप भी उसी समय उस पार्टी के साथ रहे। तो आज आप कैसे मानते हैं कि सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की नहीं? दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं पहले भी कहा, दोनों के सहयोग के बगैर सदन नहीं चल सकता। जितनी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है उतनी अपोजिशन की है, जितनी अपोजिशन की है उससे कम रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी को ज्यादा डिस्टर्ब करती है पार्लियामेंट अगर वोटर्स कट गए ना, तो उनका भविष्य क्या है? क्या वो नागरिक नहीं रहेंगे? अगर उनका आधार कार्ड कैसे वोटर कार्ड के साथ कनेक्ट होगा, या कैसे उनका पैन कार्ड कनेक्ट होगा, कैसे उनका केवाईसी अपडेट होगा? उनकी नागरिकता का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एनडीए में क्या आप सवाल उठाएंगे कि 4 करोड़ लोग निकल गए, इनका क्या? चुनाव आयोग का मैं पॉलिटिकल वर्कर में चुनाव आयोग का स्पोक्सपर्सन। ये तो राजनीतिक सवाल। त्यागी जी, ये एक पॉलिटिकल सवाल है, और जब आप भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप यूपी से आते हैं, एक बिहार की पार्टी के आप बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो आपको क्या ये चिंता नहीं लगती है कि अगर 4 करोड़ लोगों को उनका मताधिकार छीन लिया जाता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी संभावना व्यक्त की है कि आज उनका मताधिकार छीना जाएगा, उसके बाद उनको राशन देना बंद किया जाएगा, और इनडायरेक्टली वो एक मतलब सिटीजन राइट्स के बारे में है, और वो लोग जब स्टेटलेस हो जाएंगे, तो क्या आपके लिए एज अ पॉलिटिकल लीडर ये चिंता का विषय है या नहीं? नहीं, एनडीए में सवाल उठाना चाहिए ना आपको। कोई मैडम कोई इस तरह का सर्कुलर आपकी जानकारी में है? तुमको राशन नहीं मिलेगा।
जो चिंताएं आपकी हैं हमारी नहीं, बहुत सारी मैं आपकी त्यागी जी, सरकार तो कहती कुछ है करती कुछ है, तो सर्कुलर सभी नहीं, हिटलर शाही तो जरूर से ज्यादा आई है। मेरा ही मानना है सरकारें गूंगी और बहरी होती है। मैं तो एक कदम आगे जा रहा हूँ आप उनको जगाने के लिए काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सवेकनिंग होती है। मुझे अच्छा है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो अवेकनिंग है वो बढ़ती जा रही है, और अगर वो जितना बढ़ेगा सर let me respond to ये जो आपने पहले सवाल पूछा है, तो देखिए अभी जो नंबर आपने दिए हैं 6.5 करोड़, अभी तो ये कहना नहीं 6.5 करोड़ है वैसे वो नंबर 4.5 नहीं, तो अभी तो ड्राफ्ट की स्टेज, तो नंबर कितने निकलते हैं ये फाइनल इलेक्टोरल रोल के टाइम पर पता चलेगा। ये तो एक फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि Jalsa will correct me if I am wrong. In one of the earlier submissions made by the Election Commission in the Supreme Court, they said that removal of a person from the electoral roll does not amount to taking away his citizenship. This is what they have said in their submission. So this is the other aspect. तीसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ that see there was a time when the citizenship register was prepared in Assam and about 19 lakh, a few thousand people were considered to be non-citizens. And this is not something which has happened now. I think it happened even before the 2019 general elections. Election Commission took a view that our job is to protect the voting right of people. So till the competent authority arrives at a final decision about the status of citizenship, we are not going to remove anybody from the election. So this is the approach which PCI has always taken. There was one more thing which, since we are going back to the past, so let me go back to 26 November 1949. And I just want to read out one small passage from the speech in the Constituent Assembly. And I am quoting, not my words. Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best of even a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution, like a machine, is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it. And India needs today, this is 1949, nothing more than a set of honest men who will have the interests of the country before them. Sir, two brief Sir, whose quote is questions. it? One. Whose speech is it? In the present from the Telegraph, two brief questions, one to you, sir, and one to General Verma. In West Bengal and in other states as well, but more in West Bengal, people are being summoned due to what the election authorities define in quotes as logical discrepancies. This term isn't defined in law, and hence do voters have any legal recourse on being summoned, since these discrepancies aren't defined in law? And two, the question to General Verma is, as
Mr. Tyagi was pointing out, despite the fact that many people's names and so on were removed in Bihar, and as you pointed out that we can see data that more women's names have been cut than any other category. Mr. Tyagi made a point that there were no public protests during the voting in Bihar. Why do you think people aren't as worried about this scheme as yeah? Do you have related question? Nothing. Okay. Last Let them answer. And this will be last question. Sujata. No, he doesn't. No, he will ask now. Mike is here. Logical discrepancies जो word आपने इस्तेमाल किया, I also read that. Frankly, I don't understand what logical discrepancies mean. I can only guess that you are not able to correlate the information provided with your database. So that probably could mean logical discrepancies. See, one of the things which I have also written about is that when you are doing a purification or rectification exercise, if you pre-fill all the forms with your database, with no scope for anybody to correct that, you are going to inherit all the errors which you already have in your database. So the procedure is that there is a form which is pre-filled, and it is filled on the basis of the data which is there in the ECI database. The elector, he doesn't have the scope for making any corrections. He is only supposed to sign. That was the original system, that he will sign and he will give a photograph and give it back. So you have the risk of carrying forward all the discrepancies that you have in your database. सर, पहले मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। एडीआर ही एक संस्था है जो सारी इंफॉर्मेशन वोटिंग, एक मिनट में बात सुन लीजिए, वोटिंग की डेट से हफ्ता 10 दिन पहले कैंडिडेट्स की पूरी जानकारी वेबसाइट पर देती है। अब हम स्ट्रीट्स पर जाके तो करते नहीं, हम अपना उस पर डाल देते हैं, मीडिया उसको कवर करता है। मैं जानता हूँ, मैंने तो अप्रिशिएट किया। मैं ये नहीं, आपने उल्टा बोला था नहीं, कि एडीआर कुछ नहीं करता। नहीं, वो पब्लिश नहीं होती है, जनता को नहीं पता चलता है। पब्लिश करना हमारा काम है। अच्छा, चलिए, ओके। Coming to your point, as per the latest reporters collective report published on 14 January, one of the points which they have covered is this deployment of undocumented software in the middle of the enumeration phase, which malfunctioned on 29 December 25. As a result of which 3.66 crore voters were listed as suspicious in just 2 states. These are called logical discrepancies. Which now implication क्या है? कि voters have to prove their identity, voting rights, citizenship with documents, even though in the second phase of ongoing SIR, in their written instructions which they had issued for the second phase, they had said they are not required to submit the documents. So that is the problem. Now इसमें क्या था? Base data of 2002 voters list was not digitized accurately by and the CO has admitted this, CO West Bengal in a written listing. And like I mentioned, the rules have been changed midway. So ये complicated thing, I don't know what will happen with this. क्या करेंगे? And like I mentioned to you, there are so many other different छोटा चीजें, like women who got married, उनके नाम ही नहीं है, वो husband नौकरी कर रहा है सरकारी कई साल से, and the other major question which she had asked, what do you expect from the political party? I also always quote this, what Mr. Lavasa has quoted. But the problem is, वो वाले कहाँ हैं वो लोग? कहाँ गए वो लोग? अभी जो आप देख रहे हैं,
मोरालिटी, एथिक्स, इसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है ना कहीं भी, स्पेशली इन पॉलिटिक्स. There is no political will to improve the system. सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वो कहता है लॉ हैज टू बी पास्ड बाय द लोकसभा. तो लोकसभा में तो डिस्कशन ही नहीं होता इन चीजों पर. अगर होता भी है तो हॉल ओके यू सी हाउ द पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग. So in 2011, ADR had through a retired Chief Justice, very well-known Chief Justice, we had formulated a 10-page draft regulation bill on political parties. आप और हम हजारों लाखों rules, regulations, acts, DNS और फलाना और CRP सब के अंदर आते हैं. Political parties किसके अंदर आती हैं? कोई रेगुलेशन नहीं. So what we need is internal democracy in the political parties, accountability, transparency. वो कैसे आएगी? हम लोग सड़क पे ही खड़े हो जाएंगे सारे के सारे, जब तक मरेंगे नहीं 2-3 हजार तब तक कुछ नहीं होगा. Because debate, discussion, courts वो नहीं था कुछ, मेरे को तो नहीं लग रहा. So that is where we are now. It is for the people to do it. अब ना जब आपने एक सवाल और जो बोला था कि जी क्रिमिनल केसेस वाले आएंगे, अरे भाई वो टिकट ही उन लोगों को दे रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? जनता इज नॉट बॉदर्ड. आपको राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वोट करो. सर कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा बिल्कुल आधे मिनट का. सर 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 जनरल नहीं, एक ये सवाल है कि अगर जो गोदी मीडिया को इतने विज्ञापन मिलते हैं सरकारी पैसे से इतना, और वो न्यूज़ नहीं दिखाती, अगर एडीआर को वो विज्ञापन दिए जाए हजारों करोड़ रुपया, तो क्या एडीआर कर पाएगी? ये मेरा सवाल है. हम एक पैसा भी नहीं लेते सरकार से या किसी पर से. करिए हमारे डिस्पोजल पे हो जाएंगे. अच्छा gentlemen, please you ask question. And last question. I am the deputy editor of the Shambar, the largest corporate daily from So त्यागी जी, पहला सवाल आपके लिए है. आपने कोट किया था विजय जी के बारे में. अभी भी आपको लगता नहीं क्या कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम से फॉलो बिल्कुल जो पैसा अभी हम खर्च कर रहे हैं, कोई साधारण आम आदमी अभी इलेक्शन में लड़ने के लिए लायक है? एक एमपी जो पैसा खर्च करता है, सपोज पंचायत लेवल पे जो पैसा खर्च होता है कैंडिडेट में, तो आम आदमी कैसे लड़ेगा इलेक्शन? और जो इंदिरा गांधी ने उस टाइम किया था 100%, उसके लिए आप लोग अभी तक क्यों खड़े नहीं हुए? उसको सवाल क्यों नहीं उठाया? नहीं इसको करेंगे. सेकंड क्वेश्चन पहले के जवाब में जेपी मोमेंट में वीएम तारकुंडे साहब की अध्यक्षता में कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी पहली बार. एक दूसरा, एडीआर की जितनी भी रिकमेंडेशन आंख बंद करके हम सबके साथ हैं. अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को बैठ करके चुनाव की प्रक्रिया को ऐसा बनाना चाहिए ताकि कॉमन मैन की इसमें हिस्सेदारी. अगर बूथ के अक्षर कम हो गए हैं, उसका स्थान मनी पावर ने दे दिया. जब हम राजनीति करते थे फिर वही पुरानी बात आएंगी, ना हम शराब देते थे, ना हम घोड़ा गाड़ी देते थे, ना कुछ करते थे. लाखों की भीड़ आती थी अब सारे काम करने. इसलिए मैं एडीआर से एग्री करता हूँ. इस चुनाव की प्रक्रिया को सब मिल करके ये भी मिले, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मिले, ऐसा बनाए कि कॉमन आदमी का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो. सर मेरा सवाल आपके लिए है. आज तक 3 सेशन जैसे इलेक्शन कमीशन अभी तक इंडिया फिर नहीं दे पा रहा है, और ऐसा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया काम भी नहीं कर पा रहे हैं. ये क्यों है? और जो पैसा एक एमपी के लिए खर्च करने के लिए ऑफिशियली आपने डिक्लेयर कर दिया इतना पैसा वो खर्च करेगा, ऐसे कंडीशंस में आम आदमी कैसे इलेक्शन लड़ेगा? जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट है, इट इज द मैक्सिमम लिमिट, इट इज नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. तो उसमें इलेक्शन कमेटी, बल्कि कई लोग तो ये आर्ग्यू करते हैं कि एक्सपेंडिचर लिमिट वगैरह सब हटा दें, बिकॉज इट हैज बिकम इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज बिकम मीनिंगलेस. आई डोंट एग्री विद दैट, बट यू आर राइट. इफ पीपल आर रीचिंग द एक्सपेंडिचर लिमिट,
they are reaching it outside the recorded expenditure. Right? In fact, ADR can probably give the better figures. If you analyze the expenditure returns filed by all the candidates, I think only about 50% of them reach the expenditure limit. All the others, wait, only 50%. तो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली फाइल करते हैं कि हम लिमिट तक पहुंच गए. That is the reality of election expenditure. But on the other issue which Noor had raised and which Janil Saab has answered, you see, there is one thing which I think we all should urge the political parties. There is an order of the Chief Election Commissioner, the Chief Information Commissioner of India, bringing political parties in the purview of the Right to Information Act. And all political parties, they are united in not complying with that. I think if political parties are not public bodies, who else is a public body? So I think they should voluntarily accept that yes, we should be subjected to right to information. So what about PM session? TN session. वो देश भी तो नहीं है ना कि TN सेशन को अफोर्ड कर पाए. नहीं है दूसरे TN TN से नहीं है मिस्टर केले Thank you everyone. I'll tell you when we And now I really very thankful to General Saab, Lavasa sir and Tyagi ji, and especially Tyagi ji because and now all of us can come for tea and we can have more discussions. ये थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी हमारी है. पता नहीं है कौन पैसा देता है. जो काम किया वो कोई की तरफ से आगे ज्ञानेश कुमार आइए बताएं. एक बात त्यागी जी को Thank you so much. So